So this is Opesh Singh. Welcome to Zimbabwe. I'm in Zimbabwe in Harare with my friends and we are enjoying. Hello. Welcome to Zimbabwe. How was your country? Guys, Zimbabwe is one of the wonders that is not much spoken well of out there. But the good thing is Mr. Opesh Singh is here in Zimbabwe and he has seen it for himself. It's not that we are marketing our country, but it's just that Zimbabwe is a good country. That is a good thing, what you said. It's a fact. Coming into Zimbabwe, you're going to realize that there are, number one, a lot of opportunities available for, number one, international investors and for Zimbabwe themselves. We have got investment opportunities for business people. We have got a robust tourism industry that is always going up. And we have got one of the most peaceest country in the SADC region. So us having all these three in place clearly shows that if one brings their investment here in Zimbabwe, they are safe based on the return on investment, and also they know that they are going to be in a country that they can invest in and be able to spend and see the country, the beauty and everything. So what we are saying in a nutshell, we are saying come to Zimbabwe, come see this beautiful country, come invest in Zimbabwe. The 3 B's. Let's make big money, big networks. And big dreams, man. True. So today is Nelson. We are tasting Nelson, huh? Yeah. One of the good wine here. Definitely. Enjoying with our friend Opesh from India. We're glad to actually host you here. I think Mr. Opesh can actually further convince you guys at home back there in India. We want you guys here in Zimbabwe. Zimbabwe is a peace-loving country. There's nothing we can do without you guys. Our relationship stems back from the yesteryears, before we were born up to now. So let's continue with our bilateral relations. Let's continue with good business networking. And through Mr. Opesh being here in Zimbabwe, has seen the positive side. The investment climate is quite robust, as Mr. Gerald said. We are very keen to work with you, gentlemen. Please do come to Zimbabwe anytime. We actually are expecting you to come. Yeah, definitely. We want you guys to come, explore our manufacturing sector. Yes. From agriculture, you can actually intertwine agriculture, manufacturing. Of course, production comes from that. We export or we sell within our country, export to the region. Also in mining. The law is there, investors are welcome, safeguarding your investments. The political climate is quite calm. Mr. Opesh has been around with us in town. We drove around. Right now we're in Ipamatombo. We went all over the city. He has seen the city is quite clean, the climate is quite okay for business. In tourism again, it's the same. In every sector, it's the same. So I will say the early bird will catch the world. So please do come. More money, more sense. Money talks for us. So we believe let's talk together, and we're having this common ground where money unites us, where business unites us. Let's group together, gentlemen, and make business make sense for us. Everyone, money in their pockets. Thank you. सुना मेरे भाइयों, कैसे हैं आप? देखिए, दुनिया में हर इंसान अपने देश को प्रमोट करना चाहता है. जिम्बाब्वे इज़ वन ऑफ द गुड कंट्री. सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, ऑल पीपल आर नाइस, हम्बल, दे वेलकम यू, दे लव यू, दे आर विद यू, दे नीड इन्वेस्टमेंट, दे नीड टू ग्रो देमसेल्फ एंड दे वांट यू टू कम एंड जॉइन हैंड्स टुगेदर. द थिंग इज़ दिस, होता क्या है, वेन एवर यू वॉन्ट टू प्लान योर इन्वेस्टमेंट, यू डोंट नो द थिंग्स, यू गो टू गूगल डाटा, यू गो टू प्रोपेगेंडा. अब प्रोपेगेंडा किसी के खिलाफ भी हो सकता है. बहुत सारे चाहने वाले हमारे प्यारे हेटर्स वो हमारे बारे में भी डालते रहते हैं. मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, देखिए हम ना किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं, ना किसी को MLM, शेयर मार्केट, कोई रिस्की बिजनेस नहीं बताते हैं. हमारे कोई ग्रुप्स नहीं है, ना हम किसी को कोई ग्रुप ज्वाइन करने को बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ना मैसेज करते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, कमेंट करते हैं.
लोगों को पब्लिसिटी चाहिए, क्लिक बैट चाहिए कि हाँ उनको कोई देखे, दे वांट टू बिकम समथिंग। बट द थिंग इज दिस, व्हेन यू डू समथिंग रियल एंड सॉलिड, इट ऑलवेज दिखता है। मैं बोलता हूँ ना, जिंदा हो तो नजर आना जरूरी है, और उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है। मतलब 2022 में अगर आपने कुछ नहीं किया तो 2023 में भी कुछ नहीं करेंगे। If you want to make something in your life, take massive actions, tough decisions, and then your business and life will change. You know, the most important thing, actions के बिना कुछ नहीं। एक्शन लेना भी एक एक्शन है, एक्शन ना लेना भी एक एक्शन है। इतना ही कहूँगा। बहुत सारे लोग जो कहते हैं इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। देखिए, हमारे कोई ग्रुप्स नहीं है, हम किसी के साथ काम नहीं करते हैं, ना हम किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं। हम लोगों को हेल्प करते हैं उनका खुद का बिजनेस स्टार्ट करने में। 100% कोशिश आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है। पुरुष का साथ पुरुषार्थ देता है। बिना स्ट्रगल के, बिना मेहनत के, बिना हार्ड वर्क के दुनिया में ऐसा कोई धंधा नहीं है जो हो पाएगा। मैं आ जाऊं चाहे भगवान राम आ जाए, अगर आज का अपना वेजिटेबल फूड रेडी है भाई, एंड माय फ्रेंड्स दे आर आल्सो रेडी फॉर रॉक ऑन, वी आर गोइंग टू रॉक ऑन। Definitely. Rock and roll. तो जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, पुरुष का साथ पुरुषार्थ देता है। मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, परेशानियाँ आएंगी, दिक्कत आएगी। बिना मेहनत, बिना परेशानी के ना केवल चोरी हो सकती है, और उसमें भी चोर को मेहनत करनी पड़ती है। तो अपने को क्या करना है, मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है, और अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है लीगल तरीके से। सब कुछ हमारे नाम। आज हम एक ऐसी कंपनी है जो हमेशा बोलते हैं कि भाई नो ब्रोकिंग, नो कमीशन, नो ब्रोकर, नो नौकर। अब बहुत सारे लोग इससे जलते हैं क्योंकि उनका ब्रोकिंग का धंधा खराब हो रहा है। हम आपको सीधा इंटरनेशनल मार्केट में लेके जा रहे हैं, जहां आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसा बिजनेस सीधा कर पा रहे हैं। बीच में कोई ब्रोकर नहीं है, कोई कमीशन एजेंट नहीं है। थैंक यू। कैन यू गिव मी सम पेपर? वी आर फ्रॉम इंडिया, यू नो, हॉट पेपर प्लीज। तो जो चीज़ मैं आपको बताना वाला हूँ कि भाई जलते हैं, प्रोग्रेस से आदमी जलता है। आपकी प्रोग्रेस से भी लोग जलेंगे। जब आप सुपर सक्सेसफुल होंगे ना, वो लोग अपॉइंटमेंट लेके आएंगे, वो लोग आपके पास आएंगे और पूछेंगे भाई तूने कैसे किया, और अपने को क्या बोलना है कि बहुत डिफिकल्ट है। तो स्टार्ट करें आपके बिजनेस। आई एम ऑलवेज विद यू गाइस। जिम्बाब्वे वन ऑफ द गुड कंट्री, बेस्ट प्लेस। और आपने मेरे पहले भी वीडियो देखे हुए हैं। US डॉलर में कमाना है, प्लान स्ट्रेटेजिकली करना, प्लान स्ट्रेटेजिकली करना है। आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, हो सकता है 2 दिन बाद किसी का वीडियो आ जाए। जिम्बाब्वे बकवास कंट्री है, क्योंकि बोलने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ बहुत सारे इंडियंस जम के पैसा कमा रहे हैं। आप भी कमा सकते हैं। रास्ता निकालना आपका काम है, सपोर्ट करना मेरा काम है। आई एम ऑलवेज विद यू।